Kunika and I am your ePedagogue for the subject of science. Next we have another fact coming from the same place, Rajasthan. Drop by drop. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year, sometimes not even that much. The rivers here do not have water all around the year, and yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. People knew that every drop of water was precious. Lakes and johards were made to collect water. Water was everyone's need. One and all came together in this work, be it a businessman or a laborer. Some water from lakes soaked into the ground and reached the wells and bavdis, which is also called as a step well. The soil of the area also became wet and fertile. तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा था कि पिछले एरिया में जैसलमेर में क्या हुआ था, वैसे ही अब हम कुछ ऐसे विलेजेस देखते हैं राजस्थान के जहां पर लोग बहुत अच्छे से वाटर कंजर्वेशन करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो बताया था कि बहुत सारे हमारी कंट्री में ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटरफॉल है, रेनफॉल है। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि राजस्थान जैसे ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर पानी की कमी होती है। पर बच्चों, क्या ऐसी स्टेट्स में या इसके जैसी बहुत सारी स्टेट्स में क्या पानी खत्म हो गया है? अगर वहां एक साल भी बारिश नहीं होती तो क्या होता है? क्या वो पानी नहीं पीते? तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? इन सभी का आंसर कुछ इन टेक्निक्स में है बच्चों, जो यहाँ के लोग प्रैक्टिस करते हैं। It is very commendable and interesting to note students कि यहाँ पे जैसलमेर या राजस्थान के और बहुत सारे गांव ऐसे एरियाज में जहाँ पानी की कमी होती है, फिर भी यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कुछ बहुत ज़्यादा अर्बन स्टेट से भी अच्छी है। ऐसा कैसे बच्चों? The answer to this question is that people all over the state are very conservative when it comes to water as a resource. चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या कोई और इंसान जो कोई और काम करता हो, वो सभी मिलकर वाटर की एक एक बूंद को बचाते हैं। और बच्चों, याद रखिए, ये सिर्फ ऐसे ही स्टेट्स में जरूरी नहीं है जहां पानी कम होता है, बट ये हर स्टेट में जरूरी है फॉर अस एंड फॉर ऑल द नेक्स्ट अपकमिंग generations to come. Students, what they do is they make a lot of infrastructure to collect this water. ऐसा कैसे बच्चों? वो लेक्स और जोहार्ड्स के आसपास और उनको ऐसे तरीके से क्रिएट करते हैं जिससे जो भी बारिश का पानी होता है वो वेस्ट होने की बजाय कलेक्ट हो जाता है। बच्चों, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मैं अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप पे गई थी। जाते हुए, क्योंकि मैं छोटी थी और मुझे नहीं पता था, मैंने अपने पापा से ये क्वेश्चंस इतनी बार पूछे हैं कि पापा, ऐसा क्यों है कि जब हम रास्ते में जाते हैं तो हम ऐसे कितने सारे घर देखते हैं जिनके घरों के ऊपर टब होता है? नहाने का काम तो वॉशरूम में होता है, बाथरूम में होता है, तो घरों के ऊपर क्यों टब है? मेरे पापा ने मुझे बताया, जैसा कि मुझे याद है, कि बेटा ये वो एरियाज हैं जहाँ पानी की कमी होती है और ये बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है कि यहाँ के लोग जो भी बारिश का पानी गिरता है हर घर के लोग उसे बचा रहे हैं। तो बच्चों, वहीं से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे हम हाथ धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, whatever thing we use water for, it is very important for us to conserve it and not waste it. जैसा कि हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे पानी को अच्छा रखने के साथ साथ हम उसके आसपास के ग्राउंड को भी बहुत हेल्दी रखते हैं। जैसे कि हमें पता चलता है कि the soil of this area is also very fertile to grow crops. ये भी तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। पानी को हेल्दी रखने के साथ साथ, पानी की बचत करने के साथ साथ जो भी रिसोर्स उसके आसपास है, यहाँ के लोग उसे भी बहुत हेल्दी रख रहे हैं।
इसके बाद बच्चों हमें पता चलता है कि ये लोग स्टेप वेल्स और वेल्स के टेक्निक्स को भी यूज करते हैं। ये होता है बच्चों जब हम वेल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर कंस्ट्रक्ट होती हैं, और स्टेप वेल्स जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये वो स्टेप वेल्स हैं जो पानी की बचत करते हैं, पानी को वेस्ट नहीं होने देते। कैसे? ये पानी को एस्केप नहीं करने देते और जो भी रेन वाटर गिरता है इसको कंजर्व करते हैं। आई रिमेंबर बच्चों मेरी एक स्कूल पिकनिक हुई थी टू दिस प्लेस कॉल्ड बाउली। That was my first encounter to something so big where water can be conserved. तो बच्चों बाउलीज या कुंड वो जगह होती हैं जहाँ पर बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स के नीचे जगह होती है जहाँ पर पानी गिरता है और वहाँ पर स्टोर होता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स बच्चों हमें अपनी रियल डेली लाइफ में भी यूज करनी चाहिए। Let's move ahead about what this state has to offer. Every house has a system to collect the rainwater. Look at the picture on your right. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. I think all of us can do this, students. I think when the rainwater would be falling from here, it would come from this very pipe to the underground where the lady is already present with a bucket to fetch it up. Students, note all the water that is being collected here is transferred here and none of it is wasted. This is a very common practice for people who live here and want to conserve water. Have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep, as I told you, students? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. तो स्टूडेंट जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वेल की तरह कि हमें अपने सामान को या बकेट को या किसी भी कंटेनर या टैंक को नीचे भेजना, ऐसे स्टेप वेल्स में जहां पर वी यूज स्टेयर्स, वी कैन ऑल्सो गो डाउन to fetch water without wasting a single drop of water. Students, in the next section, I will be presenting you with a 3D model, a very fun creative model made by me, where I'll show you how people who live here fetch water from the wells. Students, we were talking about wells and tube wells and step wells. This is what is a traditional model of a well. This is created out of waste with some creativity. Let us see how this functions. The wheel is attached to the bucket with the help of a stick attached to a rope, which helps us to pull the bucket up and put it down to fetch water. Just like this. This model of well was very much used, especially in the rural setting where we have to contain agricultural crops and water them. Women also used to travel to longer distances to fetch water from the well just with the help of this wheel and axle mechanism. This is how bucket is pulled upwards and then put down to fetch water. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कैसे एक वेल फंक्शन करती है, बट बच्चों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ अलॉन्ग विद द फंक्शनिंग ऑफ अ वेल कि ये जो था एक ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ द वेल था। अब हमने बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कर लिए हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी अलग टेक्निक्स हैं टू फेच वाटर एंड टू प्रोवाइड देम टू आवर क्रॉप्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इरिगेशन टेक्निक्स। तो आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हमें वाटर की इम्पोर्टेंस रियलाइज करना इम्पोर्टेंट है। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells.
तो स्टेपवेल्स का एक और रीजन भी था बच्चों, जैसा कि हमने देखा था, इट हेल्प्ड इन कंजर्विंग वाटर। इसके साथ साथ ऐसा भी था बच्चों कि जो भी वॉन्डरर्स थे, बंजारास थे, कैरावान्स में ट्रैवल करते थे, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा रिसोर्स बनता है ये टू ड्रिंक वाटर। Let's look at a few questions here, students. Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason? I definitely have, and sometimes it was construction, sometimes it was no water supply for the area, and a lot more reasons, students. Talk to your grandmother or an elderly person. Find out when they were of your age, from where did they get water for the house? Has there been a change now? What kind of water arrangements were made for travelers, for example, Piau, Mashak, or any other? Now what do people do about water when they travel? तो बच्चों, आप किसी से भी अपने ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, कोई भी एल्डरली पर्सन जो आपसे बड़ा हो, उनसे ये बात कर सकते हैं कि क्या जैसे आज हम सभी को वाटर अवेलेबल है, क्या उन्हें भी ऐसे ही वाटर अवेलेबल था? वो कौन सी टेक्निक्स थी जिनको यूज करके उन्हें वाटर को लेने जाना पड़ता था? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में दिखाया था, वेल वाज वेरी वन ऑफ देम. Students, well was a very convenient and efficient method to fetch water for all of us. But students, it is also very important for us to realize कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वाटर बहुत readily available है और पूरे टाइम अवेलेबल होता है. पर बच्चों, आज भी कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जहां पर पानी अवेलेबल नहीं होता. तो हमें उनका भी सोचते हुए ये ध्यान रखना जरूरी है that we develop this sensitive approach towards water and people. So we all should do our own best to conserve this water for us and everyone around us. Because I'm telling you students, today it is water everywhere. But it is soon going to be not a single drop to drink from. Let us see, students, now this interesting section where we are going to learn about a lot of customs related to water. Even today, people get water from very old lakes, dharas, stepwells and nalas. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. See the bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village. She bows to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride washes the tap in her home. Can we even imagine life without water? This is a very popular custom, students, जिसको हम बहुत बेसिक लैंग्वेजेस में कुआं पूजन या टैप की पूजा करना, इस नल पूजन, इस सब के फॉर्म में भी जानते हैं. तो ऐसा बहुत सारी सिटीज और एरियाज में माना जाता है बच्चों कि जब भी कोई लेक पूरी भर जाती है, यानी कि उस साल जो रेन है वो बहुत अच्छी हुई होती है, सभी गांव वाले या सिटी पीपल, कोई भी जो वहाँ आसपास रहते हैं, वो उसके आसपास रहकर अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग डांस, म्यूजिक और बहुत सारी तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं. So students, not only these people are conserving water, but they are also happy that the natural resource around them they live in is filled up with water. Isn't that amazing, students? इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे कस्टम्स भी देखते हैं बच्चों, जब न्यूली वेडेड वाइफ या ब्राइड्स जाकर बहुत सारे ऐसी चीज़ों की पूजा करते हैं जिनको वो मानते हैं. जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज बाउइंग डाउन टू द स्प्रिंग और द वाटर एरिया विच शी रिस्पेक्ट्स अ लॉट. तो ऐसे बहुत सारे कस्टम्स हैं स्टूडेंट्स. आई हैव ऑल्सो हर्ड दिस वन कस्टम कि जब हम लोग कुछ बुरे काम करते हैं और हम किसी भी प्योर पवित्र वाटर बॉडी में जाकर डिप करें या सिंक इन करें या ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स या हमारे पेरेंट्स, तो हमारे लिए वो बहुत पॉजिटिव सिंबल होता है. I'm sure बच्चों, you must also know a lot of customs around you. Talk around yourself, talk to your parents, your family, your relatives, your friends, and write down what customs do you know. Students, let us look at these images where these beautiful copper pots are being filled.
Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you seen any beautiful building near the place of water? Where? So students, this is very common to places which are surrounded by a lot of temples and such water constructions like step wells, baolis, kunds, etc. जब भी हम ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं तो हम ज़रूर ये देखते हैं कि वहाँ कोई ना कोई ऐसी कार्विंग ज़रूर होती है जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कोई किंग, कोई राजा की स्टोरी, किसी फेस्टिवल का डिपिक्शन, ऐसी सब चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं। स्टूडेंट्स, कॉपर और ब्रास पॉट के साथ साथ हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्दन पॉट भी है, यानी कि मटका, और उस मटके का हम सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नॉट ओनली इट प्रोवाइड्स अस विद नेचुरल कोल्ड वाटर, but it also has a lot of health benefits, such as it provides us with all the essential nutrients from water. So students, I am sure जब आप लोग आसपास अपनी नानी दादी के घर जाते होंगे, अपने पेरेंट्स को देखा होगा आपने कि गर्मियों में जनरली हम सभी एक मटका यूज करते हैं to extract cold, nutritious water from it. Let's move ahead, students, and answer these very fun questions around us. Is there a lake, well, or step well near your house or school? Visit it and find about it. So students, मेरे घर के आसपास, स्कूल के आसपास कोई लेक या स्टेप वेल नहीं है, but I remember once I visited Srinagar and this is what I got from there. There is a very famous lake called Vular Lake present in Srinagar, which is also our largest freshwater lake, also one of the largest lakes in Asia. It is a descendant from the river Jhelum, which continuously provides as a reservoir for the water of river Jhelum. तो झेलम का जो भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो वुलर लेक में जाता है, और इस तरीके से ये एक फुल फ्लेजेड वाटर बॉडी भी है with a lot of benefits, and also it helps the original river झेलम. आइए स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चंस आंसर करते हैं. How old is it? Who got it built? So the lake that I visited was built by Zain-ul-Abidin in the year around 1444, where he discovered this island where water was surrounded by the river Jhelum. So students, but tab us time by Zain-ul-Abidin, the Vular Lake could not be transported, could not be started. So what happened was this was found and descended in the year 1990. Next we have what kinds of buildings are around it. When I visited, there were no buildings around it. Is the water clean? Is it cleaned regularly? Yes, the water was clean, and it is cleaned regularly by the people living around the place. Who all use the water? So students, this water was not just used by household chores and the people who live by, but it also provides livelihood to hundreds of fishermen. तो बच्चों, ये लेक ना ही सिर्फ बच्चे नहाने के लिए, उनके पेरेंट्स कुकिंग के लिए, फॉर फेचिंग वाटर, इस सब के लिए ही नहीं, बट इसका एक ऑक्यूपेशनल यूज भी है कि ये बहुत सारे फिशरमैन को लाइवलीहुड देता है. Is there any festival celebrated at this place? I remember when I asked around the locals, they said whenever they have to do something fun with the water, they visit the place. Is there any water today, or is it dry? Obviously there is water. It is one of the largest lakes we have in our country and the largest freshwater lake, Vular Lake, so definitely there's water around it. Students, you can choose your own lake and write these answers for yourself. Let's look ahead. What do we have to discuss more in it?